अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है बिजनेस स्टडीज़ से हमने लिया है 12th क्लास के लिए, दैट इज़ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ये जो हमारा टॉपिक है आज के लिए, इस पे आज हम बात करेंगे। तो पहले है इसका कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस। Training and development is the process of upgradation of knowledge and skills of the employees। यानी कि एम्प्लॉयज़ की स्किल्स को अपग्रेड किया जाता है और उनकी नॉलेज, उनकी स्किल्स को यानी कि डेवलप किया जाता है। दिस हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द एम्प्लॉयज़। टुडे the business organizations are existing in a dynamic environment. This has pressurized them to adjust their goods and services, the types of jobs required, and the various skills required to perform these jobs according to the changing environment. All this has increased the importance of training and development in an organization. एडवांटेजेस टू एन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी क्या एडवांटेजेस हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज बेनिफिशियल फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन एज फॉलोज। हेल्प अस इन इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर्स एंड दस लीड्स टू इंक्रीज इन प्रॉफिट। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है वर्कर्स की, इसलिए हमारे प्रॉफिट्स भी इंक्रीज हो जाते हैं। Avoids wastage of efforts and money. Help us in making effective response to dynamic environment. Increase morale of the workers. Reduces absenteeism and employee turnover. Help us to groom future managers who can take over at short notice even. एडवांटेजेस टू द एम्प्लॉयज़, यानी कि एम्प्लॉयज़ के लिए इसके क्या फ़ायदे हैं। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज़ आल्सो बेनिफिशियल टू द एम्प्लॉयज़ इन द फॉलोइंग वेज। इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज़। इट enables them to earn more money as their performance improves. Employees become efficient in handling machines so that chances of accidents are minimized. Training increases skills and knowledge of an employee, thus improving his career prospects. तो अब हम जाएंगे कि ट्रेनिंग यानी कि इसकी डेफिनेशन क्या है। ट्रेनिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ अपग्रेडेशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ द एम्प्लॉयज़. This helps us in increasing the efficiency and productivity of the employees, either in the current job or helps them to prepare for some different jobs. Definition इसकी फिलिपो ने दी है। Training is the act of increasing the knowledge and skill of an employee for doing a particular job. तो एजुकेशन क्या हो गया। एजुकेशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एम्प्लॉयज़। ट्रेनिंग किसी जॉब के लिए किया जाता है, उसी जॉब के बारे में पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, स्किल्स उसके अपग्रेड किए जाते हैं। लेकिन एजुकेशन जो होती है वो ओवरऑल डेवलपमेंट होती है। It helps in developing a logical and rational mind in an individual. The scope of education is much broader than training, as it also involves develops the qualities of mind and character of an individual. Also, it helps in understanding the basic principles and hence develop the capacities of analysis, synthesis, and objectivity. अब हम जाएंगे डेवलपमेंट की तरफ। डेवलपमेंट क्या होती है। डेवलपमेंट refers to a process which include not only such activities
as help in improving the job performance, but also those activities which result in growth of the personality of an individual. It helps an individual in realizing his her potential abilities so that they can not only become good employees but also better humans. It is an ongoing process and include training also. Importance of training. ट्रेनिंग की कितनी अहमियत है, कितनी खसूसियत है. Essential for new employees. Training is required to make freshers or new employees learn the required job, knowledge, skills, and methods quickly for achieving economy, effectiveness, and efficiency. Improves performance. Training is not only required for new employees but also for existing employees to improve their performance further. It makes existing employees more skilled and accurate in performance of their routine work. Improves employee attitude. Training reduces absenteeism and labor turnover as trained workers become self-motivated. They become more regular and loyal towards their jobs. Reduced supervision. Training reduces supervision cost to a great extent as trained employees work with more confidence and require less of supervision to handle their jobs. Coping with changes in techniques. Fifth one point is the fast rate of scientific and technological developments has made it necessary to impart training to the employees of an organization because of dynamic environment. Benefits to employees. A trained employee acquires new attitudes and skills which ultimately enhance his market value. The acquisition of latest knowledge and techniques increases his prospects within and outside the organization for higher jobs. Thanks.